to spend with people and with young people especially. हम लोग की प्रार्थना कई समय से हो रही थी कि हमारे खाली कुर्सियां हैं वो भर जाएं लोगों से, and actually I think there's no more space for people to sit. मेरे ख्याल से और जगह बची नहीं है बैठने के लिए, and we're so glad that whatever we do here can benefit more people. जो भी हम यहाँ पे करते हैं, आराधना करते हैं, उससे और लोग भी उसका लाभ उठा सकते हैं. So we are very glad for all of you who are here this morning. आप जितने लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं, बहुत खुशी है आप सबका हमारे बीच में स्वागत है. As we celebrate the resurrection year after year, and maybe decades after decades for some of you, we get so used to the whole idea of Easter celebration. साल ब साल बीतते जाते हैं और दशक भी बीतते जाते हैं आप जैसे कुछ लोगों के लिए, और पूरा ये पुनरुत्थान ईस्टर को मनाने का जो पूरा तरीका है वो हम सब के लिए शायद बहुत ज्यादा फेमिलियर, हम उसके आदी बन जाते हैं. And we who live in the cities have the luxury of going to the nearest church and attend a service and then continue with the celebrations. हम लोग जो शहरों में रहते हैं हमारे पास ये विकल्प है कि हम नजदीकी कंडीशन में जा सकते हैं और सर्विस को अटेंड करके भाग लेके हम फिर वापस अपनी खुशियों को मना सकते हैं. We also have an idea of the Bible portions that will be read most probably, and what the teacher will be preaching, roughly, and some teachers actually preach the same message on that occasion. हमें ये भी शायद मालूम रहता है कि आज भाई साहब जो वो क्या पढ़ेंगे, क्या कौन सा कलमा पढ़ेंगे और क्या प्रचार करेंगे, और कुछ पादरी जो होते हैं वो वही प्रचार भी करते हैं साल ब साल. I remember one sermon of one pastor, I will not name, and he preached that same sermon year after year whenever I heard. But today I want to deviate from the usual kind of sermon I preach. जैसा कि मैं अक्सर प्रचार करता हूँ उस प्रकार से आज मैं प्रचार नहीं करूँगा. I would first of all like to go through the chronology of the day of resurrection. First of all, कि पुनरुत्थान के दिन क्रम संख्या में क्या हुआ था. What was the chronology of the events that happened on that Sunday? And after that, I will be putting a question on the screen and we'll try to reflect on that question. तो पहले मैं निवेदन करूंगा कि वो स्लाइड हमारे सामने आ जाए. And we want to see first of all the chronology of that Easter Sunday morning. Now this chronology has been compiled with the help of all the four Gospels. जब चारों सुसमाचारों को आप पढ़ते हैं और जब उसमें हम समय के अनुसार निकालते हैं तब हमको पता चलता है कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था. And as a teacher of history also I am interested in what happened in time sequence. कि इतिहास की दृष्टि से भी पहले क्या हुआ था और फिर क्या हुआ था. So let's see what was the first thing that happened that morning. Don't need to tell the references. Maybe I'll share the slides after the one. जरूरत नहीं आपको निकालने की, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. There was a big earthquake early in the morning. Not to let Jesus out of the tomb, he needed an earthquake, but it was to permit the eyewitnesses to go inside and see. सबसे पहले भूकंप आया और उस भूकंप से वहां पे जो दरवाजे का जो पत्थर था वो सील थी वो खुल गई. इसलिए नहीं कि उससे यीशु बाहर आने पाए, उनको आवश्यकता नहीं थी. इसलिए कि जो लोग वहां पे जो देखते जाके जो दर्शन लेते उनके लिए था कि वो जाके उसको देख सकते. उसके बाद हम देखते हैं कि जो घटना घटी हुई है, मैरी मैगदलीन, Mary, mother of James, Salome, Joanna, and other women, they come to the tomb at daybreak, leaving their homes while it was still dark. उसके बाद मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम, सलोमी, जोआना और कुछ और स्त्रियां वो सुबह पाँव फटते वहां पे गई और वो वहां पे जा रही थी. उस वक्त अंधेरा ही था. उसके बाद जो मरियम मगदलीनी थी उसने जब जाकर देखा कि वहां तो कोई है ही नहीं,
So she runs and she goes and informs Peter and John, who were the closest to Jesus. पतरस और यूहन्ना को जाके मरियम मगदलीनी ने बताया कि वहां पर कोई है नहीं, जो कब्र है वो तो खाली है. Then the other women, they enter the tomb and they are addressed by the angel. जो बाकी स्त्रियां थी वो कब्र में गई और फिर वहां पे स्वर्गदूत था, उसने उन स्त्रियों से बात करने को बताया कि वो जिसको तुम ढूंढते हो वो यहाँ पे नहीं है. Then Peter and John, they arrive at the tomb after the women have left. पतरस और यूहन्ना फिर वो पहुंचे अंदर. And when they reached, they saw the grave clothes of Jesus were neatly folded and kept aside. उन्होंने देखा कि जो कब्र वाले कपड़े होते हैं जिसमें लपेटा गया था वो सब ढका के एक कैन रखे हुए थे. यीशु वहां पे नहीं थे. Then Jesus appears to Mary Magdalene. यीशु मरियम मगदलीनी को उन्होंने अपना दर्शन दिया. After that, Jesus appears to the other women. जो बाकी स्त्रियां थी उनको रास्ते में यीशु ने अपना दर्शन दिया. After that, the chief priests, as soon as they learned that the body is missing, now they needed a cover up. क्योंकि ये सरकारी फरमान था और सरकारी बंदी नियम के अनुसार यीशु को वहां पर सील किया गया था और उस लाश का वहां से चला जाना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी. It was a big problem for them to explain the missing body. And so the chief priests and the elders, they bribed the guards to cover up the resurrection. What was the story? That the disciples came and stole away the body. कि एक कहानी बना दो कि जो शिष्य आए वो उसके शरीर को चुरा करके ले गए. Then the women tell the other disciples of what they saw. उन्होंने बचा के बताया और शिष्यों को कि क्या हुआ था. And then Jesus also appears to Peter separately. अलग से यीशु ने पतरस को अपने दर्शन दिए. And later Jesus appears to the two disciples that were on the way to Emmaus. दो शिष्य एमाउस जा रहे थे, उनको रास्ते में यीशु ने उससे मुलाकात करी. And then lastly Jesus appears at night, evening. Jesus appears to the 10 who were locked in the room and Thomas was not at that time present with them. वहां पर यीशु अपने 10 शिष्यों से मिला और थोमा उस वक्त वहां पे उपस्थित नहीं था. All this happened right from morning till evening. बहुत कुछ हुआ. And you have read about all of these things, at different portions, but seeing them all together, you get the big picture. जब पूरी चीजों को साथ में देखते हैं, तब पता चलता है कि क्या क्या घटनाएं घटी. Now the question that I want to put before us is this: how can I believe that the resurrection actually took place? Living in a scientific world today, with all the researches, with all the education, and with all the liberty we have to question everything, हमारे पास आज छूट है कि हम हर चीज को प्रश्न लगा सकते हैं, हर चीज पे सवाल खड़े कर सकते हैं. And this question is not the first time that has been asked. This question has been put across the centuries. How can we know? How can we believe it actually happened? कैसे हम यकीन करें? कैसे मान लें ये सारी बातें जो थी वो हुई? How do I trust the account given by the disciples? शिष्यों ने जो बातें यहाँ पर बताई और सुसमाचार में जो उन्होंने लिखी, उन सारी बातों पे हम यकीन कैसे कर सकते हैं? It might sound a very basic question. It might even sound a very childish question. कि ये कैसा बचपने का सवाल है? We all believe. But we also need to understand deeper what we believe and why we believe. We are not blind followers of Christ. हम आंखों में पट्टी बांध करके यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते. Now, the detractors of Christianity, especially of resurrection, they have made several attempts and they keep on making several attempts to disprove the resurrection. Because if you can disprove the resurrection, then there is no faith. जो लोग मसीहत का विरोध करते हैं
वो क्या कोशिश करते हैं कि किसी तरह से पुनरुत्थान पे सवाल खड़े कर दें, किसी प्रकार से पुनरुत्थान को झूठा साबित कर दें. Sometimes they portray the disciples as weak, gullible men who had a weakness for ghost stories. कभी-कभी उनका ये इल्जाम रहता है कि ये जो शिष्य थे, ये बड़े कमजोर किस्म के शिष्य थे और बड़ी आसानी से सारी बातों पे यकीन कर लेते. Very easily they believe everything. And this is nothing short of a ghost story. ये तो भूत की कहानी है. Somebody has died and now that person comes back. It's a ghost. तो ये तो भूत की कहानी है जिसको इन लोगों ने बड़े आसानी से मान ली. और दूसरा इल्जाम लगता है, another charges that these disciples were very shrewd conspirators who conceived a resurrection plot to jumpstart a new religion called Christianity. ये जो शिष्य थे बहुत चालाक थे. इन्होंने क्या किया, एक पूरी कहानी बनाई, एक पूरी कहानी को बुना, एक षड्यंत्र रचा और ऐसा षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र से सब लोगों को बेवकूफ बना दिया और सारे लोग जो है बेवकूफ बन गए और एक नया धर्म शुरू कर दिया. उसका नाम रख दिया मसीह. Does the Bible, do the Gospels paint any such image of the resurrection? जब हम पुनरुत्थान के सारे हवालों को देखते हैं तो क्या कहीं से ऐसा देखने को मिलता है कि शिष्यों ने इस प्रकार से भूतहा कहानियों पर विश्वास कर लिया या पूरी सारी बातों को बड़े ध्यान से षड्यंत्र की तरह प्रस्तुत किया? That they were believing in ghost stories so easily and they carefully made a plot about the resurrection of Jesus. And don't forget that it was the disciples who were the eyewitnesses, and after the resurrection of Jesus, Jesus did not appear to any unbeliever. Jesus appeared only to his followers, the 11 and around 500 other disciples. And that makes it more complicated. यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ तो उसके बाद सिर्फ शिष्यों ने उसको देखा और उसके अलावा जो बाकी शिष्य थे उन्होंने देखा, लेकिन किसी भी अविश्वासी ने यीशु को नहीं देखा. And that probably creates more suspicion कि इन लोगों ने देखा, किसी और ने देखा नहीं. So how to believe what they are saying? इन्होंने जो कहा, जो देखा, इस पे कैसे विश्वास किया जाए? Now the first point, which was, did the disciples quickly believe all these the ghost stories about Jesus? यीशु को यहाँ देखा, यीशु को, just like us, no? So if someone says, you know, I have seen such and such, आप कैसे मालूम करें that person is dead? And then it's a ghost, and we all love ghost stories. Did the disciples believe in ghost stories? No. The disciples themselves were very cautious to believe any rumors. किसी भी प्रकार की अफवाह यीशु के बारे में शिष्यों ने उस पर विश्वास नहीं किया. In fact, Thomas, the disciple, he got the reputation of a skeptic. He got the name Doubting Thomas. Thomas के साथ क्या हुआ? उसने कहा मैं तो विश्वास ही नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी उंगली यीशु के जो घाव हैं उसमें डाल के ना देख लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा. I won't believe. All the other disciples also showed a lack of faith. They would not believe these ghost stories. किसी भी चेले ने, किसी भी शिष्य ने ये कहानियों पर विश्वास नहीं किया. None of them believed the report that the women brought from the grave, and they called it nonsense. जब वो स्त्रियां उनके पास खबर लेके गई कि कब्र खाली है, किसी ने विश्वास नहीं और कहा ये सब बकवास है. Matthew says in Matthew 28:17, Matthew says,
When they saw him, they worshipped him, but some doubted. जब उन्होंने देखा, विश्वास तो किया, लेकिन कुछ उसमें से शक कर रहे थे, श्योर नहीं थे. Can we call such men gullible? Can we call such men who would easily believe anything? क्या ये जो शिष्य थे, क्या ये वाकई में सारी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे? No, they were not gullible. They did not believe. So the first allegation that is put, that no, everyone just believed the ghost stories and these ghost stories circulated, cannot be true. ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि हम देखते हैं वचन में शिष्यों ने भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं. Secondly, did they invent a perfect plot to fool everyone and create a new religion instantly? I don't know whether you ever thought about these things, but when you go to Bible college, you think a lot of these things. ऐसा तो नहीं था कि लोगों ने बैठ के पूरा एक नॉवल लिख दिया और सोच सोच के बिल्कुल कैसे लिखें कि सब लोग यकीन कर लें. How to write that everybody will just believe everything you say. Since only the gospel writers were the eyewitnesses, but they have invented the whole resurrection episode. क्योंकि जो लिखने वाले थे और जिन्होंने आंखों से देखा, जो चश्मदीद गवाह थे, वो तो सिर्फ शिष्य ही थे. तो फिर उन्होंने जो लिखा, क्या उस पे विश्वास कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं. ये सब उन्होंने खुद ही अपने मन से मन गढ़ंत कहानी बना दी, हुआ कुछ और लिख कुछ और दिया. ऐसा तो नहीं हुआ. Then someone read 2 Peter 1:16. 2 Peter 1:16. दूसरा पत्रस 1:16. जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, पर हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था. We were not making cleverly invented stories. हम लोग ने चतुराई से कहानियां बैठ के नहीं पढ़ी. But we were eyewitnesses. We saw it with our own eyes. हमने बैठ के वहां पे कहानियां नहीं पढ़ी. Now the Gospels were written only about 3 or 4 decades after the resurrection. Let's think about this. 30 से 40 साल के बाद ही नए नियम में खासतौर से Gospels को लिखा गया. So the disciples have plenty of time, 40 years, to fabricate the resurrection account. 30 से 40 साल का समय उनके पास था, आराम से बैठ करके सारी बातों को तोड़ के मरोड़ के अपने हिसाब से बना के प्रस्तुत कर सकते. They could have had enough time. They didn't have to submit the report the next day. अगले दिन ही कोई रिपोर्ट बना के नहीं देनी. 30-40 साल का समय था उनके पास. अगर उन्हें फेर बदल करनी होती, अपने हिसाब से बदलाव करने होते. A conspiracy theory should be such that covers all the loopholes of the story. अगर कोई षड्यंत्र बना के कोई चीज प्रस्तुत कर रहा है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए षड्यंत्र बनाया जाए, ताकि कहीं से कोई बात छूट ना जाए, कहीं कोई चूक ना हो जाए. और 30-40 साल बहुत होते हैं षड्यंत्र रचने के लिए. 30-40 years are enough to fabricate a story of resurrection. It must show that all characters in that story are in perfect harmony with each other. जितने भी लोग उसमें involved थे, वो सब लोग, सारे पात्र एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं. It should have been such that the reader is left with no choice but blindly believe everything written in the book. ऐसा लिखा जाता, इस प्रकार से लिखा जाता
पढ़ता है वो तुरंत सब यकीन कर लेता है, शक की गुंजाइश ना होती। Do the gospel accounts show any conspiracy? जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं, मत्ती, मार्कुस, लूक, यूहन्ना, तो क्या हमें उसको कोई षड्यंत्र दिखता है? The gospels show disciples are scared. They lock themselves in, fearing that what may happen to Jesus might happen to them. शिष्यों ने अपने आप को वो डरे हुए थे। कौन अपने आप को डरा हुआ दिखाता है? I will never write anywhere that I'm scared. कौन अपने आप को डरा हुआ दिखाता है? अगर झूठ लिखा है तो they showed themselves as scared. They locked themselves. The disciples of Jesus locking themselves up and scared, hiding. डरे हुए थे कि अब जो यीशु के साथ हुआ वही हमारे साथ भी हो सकता है। They are right about that. The Gospels show women as the first witnesses of the resurrection. Something outrageous. उस समय में उस जगह पे स्त्री की कोई वैल्यू नहीं थी, and there was no credibility to the testimony of female witnesses in the court. अगर महिला को कुछ अपनी गवाही देनी है तो महिला गवाही का कोई वैल्यू नहीं थी, जीरो। तो फिर अगर वो चाहते कि इस पूरी कहानी को गढ़ा जाए तो स्त्रियों को ना दिखाते, किसको दिखाते? हो सकता है यूहन्ना को दिखा देते, निकोडिमस को दिखा देते, पतरस को दिखा देते। They could have shown Nicodemus, they could have shown John or Peter, someone of that stature. But women, who is going to believe in them? स्त्रियों पे कौन यकीन करेगा? They did not do that. After the crucifixion, all disciples ran away except John. सारे शिष्य वहां से भाग गए. Who shows themselves as, runaway disciples? भगौड़े शिष्य. अपने को कौन दिखाता है? Who shows themselves as that? And these were carefully invented stories, then the writer should have done much better. A cleaner job of writing the account and showing themselves as great heroes. अगर इन सबको मनगढ़ंत कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाना था, तो वो अपने आप को बहुत अच्छे से इसको लिखते, साफ सुथरा काम करते और अपने आप को एक नायक की तरह प्रस्तुत करते। But the gospel accounts that we read spells out the plain facts of what happened. जब हम पढ़ते हैं सुसमाचार को, तो जो हुआ, जैसा हुआ, बिल्कुल वैसा ही होगा। We who are living on this side of Easter will find it quite difficult to understand how disciples must have felt at that time. हम लोग जो ईस्टर के इस तरफ रहते हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है समझना कि शिष्यों ने पे क्या बीताई होगी, कि जो शिष्य हैं उस वक्त उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। The empty tomb only showed that he is not here. Not necessarily he is risen. जब शिष्यों ने जाके उस खाली कब्र को देखा, तो उसका मतलब ये तो था कि वो यहाँ नहीं है। He is not here. यीशु यहाँ नहीं। इसका मतलब शायद उनके लिए ये नहीं था कि वो पुनरुत्थान पा चुका है या जीवित हो चुका है। It's very difficult for them. It's very easy for us because we are on this side of the history. हम लोग इतिहास के इस तरफ हैं, हमारे लिए ये मानना और ज्यादा मुश्किल नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल। In fact, Paul says, let's read 1 Corinthians 15:14. पहला कुरिन्थियों 15:14 में पौलुस क्या कहता है? और यदि मसीह जिलाया नहीं गया, तुम्हारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। And if Christ has not been raised, our teaching is useless and so is your faith. So Paul
And all the gospel writers are putting their entire ministry at stake when they are saying that if Christ has not been raised, all our preaching and ministry is useless. Who would do that? Who would put the entire preaching and ministry at stake? अपने पूरे जीवन का कार्य को दांव पे कौन लगाएगा? अगर ये बात झूठ है तो एक झूठ के लिए अपने पूरे करियर को, पूरे काम को, पूरे मिशन को दांव पे कौन लगाएगा? How could the church be established if the resurrection was? The resurrection account did not grow in the church. The church grew around the resurrection account. जो पुनरुत्थान का सत्य था उसके कारण कलीसिया बढ़ी. तो अगर ये झूठ था या ये फेक था, धोखा था, तो फिर कलीसिया कैसे बढ़ी? How could a church begin with such power and grow soon after his resurrection if it was not true? इतनी जल्दी कलीसिया कैसे बढ़ी पूरी दुनिया में अगर ये सच नहीं था? How could tens and thousands submit their lives to the risen Savior? Acts of the Apostles says thousands were being added to the numbers daily. प्रेरित हमको बताता है कि हजारों में लोग कलीसिया में जुड़ रहे थे. If it is fake, if it is not true, कैसे ये मुमकिन है? Let me also touch a little bit of church history. थोड़ा सा कलीसिया के इतिहास की ओर भी जाएंगे. Right from the time of Jesus' ascension, after that, intense persecution broke out in that place on anyone who wanted to follow Christ, anyone who wanted to become a Christian. यीशु मसीह के स्वर में उठाए जाने के बाद कोई भी व्यक्ति यदि कह दे कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूं या मैं मसीह हूं, उसके लिए सबसे खराब वाला सताव तैयार था. कितने साल तक हुआ ये? For how many years? 313 years. 313 साल तक. Not 1 or 2 years. 313 साल का सताव. Can anyone explain why men and women would suffer and die for something which they knew which is false? कि स्त्री और पुरुष क्यों इतनी ऐसी मौत मरेंगे, कष्टदायक मौत मरने को तैयार थे एक ऐसी बात के लिए जो झूठ है? Now in that great persecution period there was also there was a time of which was called great persecution. Persecution सताव जो था 313 साल का, उसमें महा सताव का समय था. From 303 to 311 AD, 303 से लेकर के 311 तक एक महा सताव का समय था लोगों के लिए. The emperor ordered Christian buildings and homes of Christians tore down. All the sacred books collected and burned. Christians were arrested, tortured, mutilated, burned, starved, and condemned to gladiatorial contests to amuse the spectators. क्या हो रहा था उस समय में कि 313 से 11 के बीच में जो वहां पे जो राजा आया उसने ये ऑर्डर दे दिया कि सारे मसीही बिल्डिंग सबको तोड़ दिया जाए, सबके घर जला दिया जाए, उनकी किताबों को जला दिया जाए, मसीहों को जला दिया जाए, टॉर्चर किया, शरीर को काट दिया जाए, भूखा मारा जाए. और ग्लैडिएटर्स आपको मालूम होगा जहां पे लड़ाइयां करवाते थे वो लोग, जब तक एक मर ना जाए उसमें से, ताकि देखने वाले लोग का मनोरंजन होने. All of that happening for a fake story, एक झूठी कहानी के लिए. Hard to believe. Those of you who have knowledge of computers will remember in 1997 onwards there was this concept of burning CDs. We used to burn CDs. CD write करते थे हम लोग, और उसका एक सॉफ्टवेयर था, उसका नाम था नेरो. नेरो बर्निंग रॉम. कहां से आया ये नाम नेरो? There was an emperor
called Nero, who would use the Christians to light his gardens. You burn the Christians. मसीहों को जलाता था ताकि उसके भवन पैलेस में रोशनी हो सके रात में. People were being burned for a fake story. एक झूठी कहानी के लिए, एक मनगढ़ंत कहानी के लिए. And the church was growing. कलीसिया बढ़ रही. And India has a very special place in this development. Right after the resurrection, very soon, पुनरुत्थान के बाद भारत देश का बहुत बड़ा एक स्थान है. The tradition of Saint Thomas visiting and ministering to India in AD 52. ईस्वी 52 में थोमा भारत आए. You go to South India, you do some research, you read about Kerala, and you will find a very strong Saint Thomas tradition. थोमा के बारे में आप साउथ इंडिया जाके देखिए, केरला जाके देखिए, मालाबार में जाके देखिए, बहुत मजबूत वहां पे लोग मिलेंगे जहां पे सेंट थॉमस आए थे. When Vasco da Gama came to India in 1498, and these Portuguese were surprised to find Christian communities thriving in the south of India. जब वास्को ड गामा 1498 में आए तो वहां क्या देखा इन लोगों ने कि वहां तो पहले से ही मसीही लोग हैं. And they were even more surprised when the locals told them that the churches were established by Saint Thomas. वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने दावा किया कि ये हमारी कलीसियाएं सेंट थोमा के समय से. On this discussion and history actually can go on and on and on. And I would like to leave the rest of the research and history for your homework. आप और पढ़ सकते हैं और आप इन सारी बातों को और विस्तार से देख सकते हैं. But the point now is that if the resurrection of Jesus is true, which we believe is true, what does it mean for you? कि यीशु का पुनरुत्थान और मुर्दों में से जी उठना यदि सत्य है और सत्य है तो फिर आपके लिए और मेरे लिए इसका क्या महत्व है? We who are sitting 2022 years away, what does that mean for us? There is something that has clouded the whole world, and that is death, the fear of death. अगर कोई एक चीज है जिसने दुनिया के किसी भी कोने में काले बादल, घने काले बादल से घेर रखा है लोगों को, आज नहीं हमेशा से, खास तौर से पिछले 2 सालों से, तो वो है मृत्यु और मृत्यु का भय. Countless people have died in the last 2 years and in the previous years, and with this war going on in Ukraine and Russia and other places, there is actually no count. कोई गिनती नहीं है. Whether you're rich or poor, whether you're educated or illiterate, whether someone is a believer or unbeliever, death is inevitable. निर्धन है या धनी है, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, विश्वासी हैं अविश्वासी हैं, लेकिन मौत और मृत्यु एक ऐसी चीज है जो सब पे आनी है. No one can escape. That is inevitable. Hardships are unavoidable. Struggles are unavoidable. They will come. बुरा समय, कष्ट का समय सब पे आएगा और आकर मृत्यु का भय. So many of their concerns reflect that. We are traveling, please pray that the reach safety. I feel that there's risk
every moment. I stay on the 8th floor. We have experienced earthquake once or twice. There's not much you can do when you're on the 8th floor. So I live in a constant fear. I mean, I don't think, but someone like me should be sending prayer concerns 24/7 because I'm on the 8th floor. I have to go down by the lift. What if the lift doesn't stop? अगर वो lift नहीं रुकी तो? Every time actually I'm on the elevator, I see 7, 6, 5. And what if it doesn't? Actually, it happens sometimes. I don't know what. I have to stop on 0, but it goes to -1. And I thought, I hope it stops on -1 because there is no -2. That fear is there. Would die. That death थोड़ा सा लेट हो जाए, कहाँ है, क्या हो गया? That fear is there in everyone. सबके अंदर वो मौत का. John 11:25-26. Please read someone. English and Hindi. John 11:25-26. यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? Jesus said, I am the resurrection and the life. पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ. The one who believes in me will live. जो मुझ में विश्वास रखता है, वो मरेगा नहीं. Even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. What does that mean? Does Jesus want to live on this earth forever? Who wants to live on this earth forever? Anyone? I don't think anyone wants to stay on this earth forever. The resurrection of Jesus does not avoid death, physical death, but it shows that it has been overcome. The fear has been overcome. मौत नहीं रोक सकती, लेकिन मृत्यु का भय पे विजय प्राप्त कर. और अगर मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर ली है, तो मृत्यु पर ही विजय प्राप्त कर. It is the fear of death that kills you, not death. When you are dead, then you are dead anyways. How do you feel? How do you know that you are dead? It is the fear of death that kills you. Every second of your life. जो मृत्यु का भय है, वही आपको हर क्षण मारे डालता है. मृत्यु थोड़ी मारती है. मृत्यु तो जब मर जाएंगे तो मर ही जाएंगे. कैसे पता चलेगा कि मृत्यु जीवित है कि मृत है? And so the resurrection shows death is cannot be avoided, but the fear of death is overcome because of Jesus. The resurrection establishes the fact that no matter how crushed you may get, you will triumph. इस सत्य को स्थापित कर, जितना आप चाहे दब जाए, जितना कष्ट में हो जाए, लेकिन फिर भी विजय को प्राप्त करेंगे. क्यों? यीशु ने कहा, क्योंकि मैंने विजय को प्राप्त किया. I have overcome. So maybe that cancer may not go forever. Maybe you may not get a better job soon. Maybe your relationships will continue to hurt. शायद वो बीमारी हमेशा के लिए दूर ना हो. शायद एक अच्छी नौकरी जल्दी ना मिल पाए. शायद आपके जो संबंध है किसी के साथ, वो जल्दी ना सुधरने पाए. But with Jesus we experience the victory, even in those circumstances. लेकिन यीशु के साथ हम अनुभव करते हैं उस विजय को. So Jesus may not remove all the hurdles and hardships,
शायद यीशु सारे दुख तकलीफों को तुरंत आपके जीवन से दूर ना करें, but he picks all the broken pieces of our lives and he makes something beautiful out of it, and he is an expert of that. वो हमारे जीवनों के टूटे हुए टुकड़ों को उठाता है, बटोरता है और उससे एक सुंदर व्यक्ति आपको और हमको बनाता है। और इस काम में यीशु मसीह को महारत हासिल, he is an expert of that, of picking our broken pieces, taking our fears, taking our sorrows and making something beautiful. हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को, हमारे भयों को उठाता है और एक सुंदर वस्तु बना देता है। So when we were observing Good Friday, we were seeing Jesus hanging painfully on the cross. Good Friday जब मना रहे थे, तो हमने क्रूस पे यीशु को तकलीफ में लटके हुए देखा। But when you observe the resurrection, you observe the empty cross. जब हम पुनरुत्थान को मनाते हैं, तो हम खाली क्रूस को देखते हैं। तब इस क्रूस पे यीशु को लटके हुए नहीं देखते। So let me finish by asking you this question: which cross are we looking? किस क्रूस पे हम देख रहे हैं? Jesus invites us to look at the empty cross, to look at the empty tomb. खाली कब्र को देखें और खाली क्रूस को देखें। The empty cross signifies that the price is paid and Jesus reigns. खाली क्रूस का दिखाता है कि जो दाम है वो चुका दिया गया और यीशु मसीह हमारा आज विराजमान है। We experience the victory and triumph of Jesus in a very personal way today. प्रभु यीशु मसीह का विजय, उसकी शांति एक व्यक्तिगत रूप से आप सबको मिलने पाए। May Jesus meet you afresh and draw you closer to himself. यीशु मसीह आप सबसे, हम सबसे मुलाकात करें और हमें अपने नजदीकी में ले। आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you that we don't follow legends and stories, but we follow a living God who worked in history and continues to work in our lives. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हम कथाओं पे विश्वास नहीं करते, कहानियों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन इतिहास में जो वास्तव में आपने किया इस पृथ्वी पर और आज जो आप हमारे जीवनों में कार्य कर रहे हैं, हम उन सब बातों को अनुभव कर सकते हैं। And we thank you, Lord, for that. We thank you that the great hope that you give us, the great hope that things change when we believe in you. Our minds and hearts, they change. The way we look at situations changes and fills us with your peace. आपकी सहायता से, जब आपके नजरिए से जब हम अपने परिस्थितियों को देखते हैं प्रभु, तो सब बदल जाती है, सुंदर बन जाती है। And most of all, Lord, we again thank you for the hope that we have after we die on this earth. इस पृथ्वी पर मृत्यु के बाद हमारा क्या हो, हमारी आत्मा का क्या हो, हमारे प्राण का क्या हो, हम जानते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए जगह तैयार करी और हम आपके साथ में होंगे अनंत काल के। Lord, in the present, you help us overcome all our disabilities and handicaps. वर्तमान में भी प्रभु आप हमारी सहायता करते हैं, सारी निराशाएं
सारी बाधाओं के ऊपर आप हमें ऊपर उठाते हैं। Help us, Lord, once again to place our full trust in you. अपना पूरा भरोसा हम आप पे लगाने पाएं। In Jesus' name.